request for them to fulfill. The reason I'm saying this, sir, is because the rules have been changed. This is not just said in isolation. Speaker, sir, the election commissioner used to be chosen by the Prime Minister, Leader of Opposition, and the Chief Justice. Sir, the Chief Justice was removed from that committee. Why? Why? This is a question, sir. This is a question to the Prime Minister. Why was the Chief Justice removed from the committee? Now, in a few days, I'm going to go to the meeting. I'm going to go to the meeting. There's going to be Mr. Amit Shah and Mr. Modi ji, and there's going to be me. 2 to 1. Why am I even going to the meeting? What is the purpose of me going to the meeting? I'm only going to the meeting to certify what Modi ji and Amit Shah ji are going to say, right? Whereas if the Chief Justice was there, there could be a discussion. Chief Justice and Leader of Opposition could say, no, we don't agree. So there seems to be a calculated strategy. Now, just prior to the Lok Sabha, the election commissioner was changed and 2 new election commissioners were placed. Yeah. Yeah. We know that the election dates were changed. Yes. We know that the elections were postponed. These are facts. These are not things I am inventing. So, in order to safeguard this constitution, the entire opposition requests the data for the Maharashtra election. We request the data and the electoral voter list for Lok Sabha and the corresponding list for Vidhan Sabha. And I am very confident that the Election Commission will not give us this information. Speaker, sir, that is broadly. So the third element of our President's address would be a determined defense of India's institutions, of our democratic system, and a re-look at our entire democratic framework, and the looking again at all the institutions that have been taken away from the people of India. So those would be the type of things that we would say in a presidential address. I'd like to finally say one thing. In the last, थोड़ा बढ़ा देता हूँ. अब मैं थोड़ा और खींचूंगा. अब और खींचूंगा थोड़ा. अब और खींचूंगा. So in the last, there is a background, a philosophical background to what I am saying. Essentially, what I am saying to the youngsters of India and to this house is that instead of focusing on multiple things, instead of telling us a laundry list, give us a strategy, give us a vision, make it clear, right? Now, there is a philosophical basis to this. There is even a deep philosophical basis to this. I showed you the picture of Shivji, which you didn't allow me to show. I showed that picture for a reason. What does that picture tell us? If you look at that picture carefully, it tells us focus carefully. Do not get distracted. Do not look here and there. Do the job at hand. So there is a philosophical basis to the speech I have given. I have not told the House and the country that we will do this, and this. This is the philosophy of Shivji. Say what you have to say, but be clear that you're going to do that one thing and don't do 56, 70 different things. So there is a link between our philosophical tradition, our religious tradition, and what I'm saying. And that is what India needs to do. India needs to connect the past, the values of the past. You talk about Sardar Patel ji, but you destroy Sardar Patel ji's values every day. You talk about Ambedkar ji, you destroy his values every day. You talk about Nehru ji. No, you don't talk about Nehru ji. Right? You bow in front of Buddha. You destroy what he says. So the point is, you have to be truthful to what you are, right? And it is important that when you are giving a way forward to the nation, there is clarity. There is clarity of purpose. There is no hatred. There is no violence. There is no anger, because these things are destroying our country.
my speech has not been angry, has not been nasty. My speech has been very polite, very kind, and I thank the Prime Minister for coming and listening to it. माननीय श्री नरेश चंद पटेल, माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष जी, जाने वाले कोई नहीं रुक पाएगा। आप तो अपना भाषण दीजिए। महोदय, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुझे बोलने का मौका दिया। मानवर, इस सदन में बोलते हुए सबसे पहले मैं महाकुंभ में हुई दुखद घटना को स्मरण करना चाहता हूं। उन सभी श्रद्धालुओं और भक्तों को मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मानवर, जिन्होंने अपने जीवन की आस्था और भक्ति के साथ पवित्र स्नान करने का संकल्प लिया था, लेकिन दुर्भाग्यवश प्रशासनिक कुप्रबंधन और लापरवाही के चलते वो काल के गाल में समा गए। मानवर, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं थी, बल्कि सरकार की नाकामी का ये एक जीता जागता उदाहरण था। महाकुंभ, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन माना जाता है, जो लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का केंद्र है, ये केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक है। परंतु जिस प्रकार की अव्यवस्था इस बार रही, वो न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि सरकार की संवेदनशीलहीनता और प्रशासनिक कुप्रबंधन को उजागर करती है। मानवर, क्या यह सरकार को पता नहीं था कि इतने विशाल आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालु आएंगे? क्या योजनाएं केवल कागज में बनती हैं, जो जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है? मानवर, इस महाकुंभ में बड़ी बड़ी बातें की गई कि हम इस तरीके का प्रबंधन कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार ने महाकुंभ में मरने वालों की सूची जारी नहीं की। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में पहले दिन कहा था कि महाकुंभ पर चर्चा हो। यह दुनिया का बड़ा मेला, इस मेले में इतनी बड़ी अव्यवस्था, डबल इंजन की सरकार, और डबल इंजन की सरकार में जिस तरीके का जनता के साथ मजाक हुआ, ये घोर निंदनीय है। मानवर, इस सरकार में असफलताओं की बहुत लंबी सूची है। मानवर, शिक्षा जो किसी राष्ट्र की बुनियाद होती है, आज भ्रष्टाचार की गर्त में जा चुकी है। हर प्रतियोगी परीक्षा में मानवर मजाक बनकर रह गई है। मानवर, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में जगह जगह पेपर लीक हो रहे हैं। सरकार ने एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का गठन बड़े बड़े वादों के साथ होते कहा गया। मानवर, यह संस्था निष्पक्षता, पारदर्शिता की नई मिसाल कायम करेगी, लेकिन आज ये हालत है कि परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही सोशल मीडिया में पेपर लीक हो जाते हैं। क्या यही सरकार की पारदर्शिता है? क्या यही डिजिटल इंडिया का सच है? नीट की परीक्षा, जो लाखों छात्रों के मेडिकल के करियर को भविष्य तय करती है, उसके बार बार पेपर लीक की घटनाएं होती हैं। मानवल, रेलवे भर्ती, एसएससी की परीक्षा, यूजीसी, नेट, कोई भी परीक्षा इस सरकार की अक्षमता से बच नहीं पाई है। एनटीए को स्थापित करने पर सरकार ने जो बड़े बड़े दावे किए थे, वो मानवर खोखले निकले। मानवर, महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण में किसानों की फसलों के मूल्य के एमएसपी की गारंटी का कोई जिक्र नहीं है। लगातार
देश के किसान, करोड़ों किसान इस बात की आशा लगाए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय जो कहा था कि हम एमएसपी की गारंटी देंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, लेकिन आज हमारे देश का किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज पूरे देश के अंदर किसानों में जिस तरीके की निराशा है वो लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। मानवर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो इस देश को और प्रदेश को चलाते हैं, जब चुनाव में जाते हैं, चुनाव में कहते हैं हम किसानों को लाभकारी मूल्य देंगे, हम किसानों को मालो माल कर देंगे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने आय दुगुना करने की बात भारतीय जनता पार्टी ने किया था। आज ये देश किसानों का देश, जिस देश के किसानों के साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का दोहरा मापदंड अपनाए है, उससे हमारे लोकतंत्र को बहुत आघात पहुंचा है। मानवर आज हम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से लोकसभा के सदस्य चुनकर आए हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव जी ने अपने जमाने में किसानों को खाद, बीज, कीटनाशक दवाओं का लगातार प्रबंध किया था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में अभी बुआई के समय खाद की जितनी बड़ी किल्लत हुई, डीएपी मिली नहीं, यूरिया ब्लैक में मिल रही है, किसानों को पानी नहीं मिला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। डबल इंजन की सरकार डबल असत्य भाषण पर विश्वास करती है। आज भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरीके का काम किसानों के साथ कर रही है, मानवर हम किसान के बेटे हैं, हमारे यहाँ आज किसानों के साथ डबल दुख हो रहा है। मानवर हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में छुट्टा जानवरों से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, लेकिन वो हमारे किसानों की फसलों को फसल बीमा के अंतर्गत उनको कोई लाभ नहीं मिलता है। मानवर इसका जिक्र इस हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति का भाषण है, इस पर इसका कोई भी जिक्र नहीं है। मानवर किसान बीमा की दुर्घटना की शुरुआत समाजवादी पार्टी के समय में हमारी पार्टी के संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। पहले किसानों को कोई भी दुर्घटना का बीमा का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों को बीमा दुर्घटना के नाम पर 1 लाख की राशि निर्धारित की थी, जिसे बढ़ाकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने 5 लाख रुपए कर दिया था। समय बीतता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन किसान बीमा दुर्घटना पर आज वो 5 लाख की राशि लगातार वही बनी हुई है। हमारी मांग है कि किसान बीमा दुर्घटना की राशि को कम से कम 15 लाख रुपया करना चाहिए। मानवर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम मुफ्त सिंचाई देंगे, किसानों को हम मुफ्त सिंचाई देंगे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में मुफ्त सिंचाई नहीं है। बिजली महंगी हो गई, डीजल का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, लेकिन किसान परेशान है। आज भारतीय जनता पार्टी ने मुफ्त सिंचाई की बात करके किसानों के साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। मानवर समाजवादी पार्टी के नेता ने अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश के किसानों को सरकारी नलकूपों का पानी और नहरों का पानी फ्री किया था, और उसी सड़क के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय कहा था कि हम किसानों को निजी नलकूपों का भी बिजली का बिल माफ करेंगे। आज उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन किसानों को बिजली फ्री नहीं मिल रही है और उनके ऊपर बिजली का भार दुगुना किया जा रहा है, और निजी नलकूप धारक के ऊपर बिल लगाया जा रहा है। जो किसान ट्यूबवेल उनके वो फेल हो चुके हैं, उनके ऊपर भी बिजली के बिल लगाए जा रहे हैं। मानवर उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है। आज अभी फसल आई, धान की फसल, जिसका जिक्र इस अभिभाषण में नहीं है। मानवर धान की फसल में धान के किसान परेशान हैं, उनका धान लागत मूल्य से भी कम में लिया जा रहा है और किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। मानवर आज प्रदेश के अंदर जिस तरीके से किसानों में निराशा है, इसका जिक्र इस महामहिम के अभिभाषण पर नहीं है। मानवर आज हमारे मनरेगा के मजदूर सबसे ज्यादा परेशान है। मनरेगा की मजदूरी उनको समय से मिलती नहीं है और न उनकी आज तक मजदूरी बढ़ाई गई है। मानवर आज महंगाई लगातार बढ़ती जा रही, महंगाई के रोकने के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कोई ध्यान नहीं है। आज
हर चीज महंगी है, उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में असंतुलन है। लगातार उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में असंतुलन की वजह से जो किसान है, जो कमाता है, और वो आदमी सबसे ज्यादा परेशान है, और जिस आदमी को उनकी फसल खरीदनी पड़ती है वो भी परेशान है। उपभोक्ता और उत्पादक के बीच में असंतुलन की वजह से आज चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। हम लोग दिल्ली में देखते हैं मानवर, आज किसान अपनी फसल का लागत मूल्य नहीं पा रहा, लेकिन आज खाने वाले को वही महंगा मिलता है। यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। मैं मानवर आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारे देश में रुपए की वैल्यू, हमारे देश में मुद्रा की वैल्यू लगातार घटती जा रही है। हमारा रुपया बहुत ही कमजोर है। इसकी मजबूती के लिए भी इस महामहिम के भाषण में इसका कोई भी जिक्र नहीं है। और लगातार हमारे देश में विदेशी कर्ज मानवर बढ़ रहा है, विदेशी कर्ज बढ़ रहा है। विदेशी कर्ज कैसे कम हो, इसका भी इस महामहिम के भाषण में इसका भी कोई जिक्र नहीं है। किसानों को आज दर दर की ठोकरें खाना ना पड़े, इसलिए मानवर मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे किसान जो पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक हैं, आदिवासी हैं, उनका रिजर्वेशन भी मानवर आज भारतीय जनता पार्टी ने पूरा का पूरा चौपट कर दिया है। जो किसानों के बच्चे हैं वो पिछड़े वर्ग से, दलित समाज से, अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने संविधान में प्रदत्त जो आरक्षण है उसको भी आरक्षण खत्म करने का पार्टी लगातार महिलाओं के साथ भी अन्याय करती जा रही है। और मानवर नारी शक्ति बंधन अधिनियम लागू करने की बात कहा। मैडम प्लीज, के नेताओं के भाषण सुने कि हमने प्लीज, थैंक यू। लोकसभा और राज्यसभा में उनको 33% आरक्षण दिया था, लेकिन मानवर ये कब लागू होगा नारी शक्ति बंधन अधिनियम? थैंक यू। इसकी भी मैं मांग करता हूँ। मानवर राज्यपाल महामहिम डॉक्टर दास्तीगार, भाषण में डॉक्टर दास्तीगार, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। Thank you, Chairperson, sir. I stand here on behalf of All India Trinamool Congress and my leader, Srimati Mamata Banerjee, to take part in the motion of thanks of the speech addressed to both the houses by Mahamahim Rashtrapati Ji, Srimati Draupadi Murmu. I also express my greetings. Today is Vasant Panchami to all members here and to all the citizens. And I wish there was a holiday for us. Itminan se puja karte. Lekin wo nahi hua. I am a very religious person, a devout Hindu, but I believe and respect all religions. And that is why, like me, there were millions of Indians who were preparing for the Mahakumbh Mela that was supposed to take place after 144 years. Some of the poor people were saving money to go and take the Mahasnan on the Mauni Amavasya. Sad to say, Mahamahim Rashtrapati Ji in her message spent only 61 words to express her sorrow and has not condemned the death, has not given condolence message to the families of the dead. We are very sorry for it because she's totally neglected the dead people, and there is definitely a discrepancy between the number of dead bodies in the morgues as said by the doctors and the number of dead bodies or people missing that we see. The same thing had happened in the state in the COVID times. So this state, how much ever advertisement they did, but while preparedness is concerned, where disaster management is concerned, they have failed. They are giving zero because they should not be given this kind of responsibility where they play with the lives of the common man like this. Now, after we go on to her speech,
where she mentions about the middle class. You know, as per as the National Council of Applied Economic Research says, 30% of the total population of India belong to the middle class. And we had the budget on the next day, in which a lot of promises were made. Who is the middle class? People who earn between 2 and 10 lakhs of rupees per year, supposed to be the middle class. But what about the inflation? What about the food inflation? And what about the support to the farmers? What about waiving off the loans for the farmers? Nothing is mentioned in the speech of Mahamahim Rashtrapati ji. I'm sorry to say, the multinationals and the billionaires' loans have been waived off by the banks, but not that of the farmers. This is absolutely unwarranted in a country where we depend on the farmers for our food. The people, we live in the cities, we don't grow our food, the farmers do, they toil in and out, and they were sitting at the Singhu water. In the border, they were tortured, but they were not given the waivers. I would also like to draw the attention of the Honorable Rashtrapati ji's speech, where she talks about the teaching. She says that the colleges are being increased, the number of universities are being increased, but isn't it an irony that there are no teachers? The number of teachers are not being increased, and the amount is absolutely ridiculous. What is being taught in certain states, I don't want to name those states, because there also, as in the Mahakumbh, there is failure. In the same state, teaching is such a failure. The teachers don't know how to add 9 plus 13, where to talk about the students. Mahamahim Rashtrapati ji, she talks about the medicines, where she says that some drugs have been made customs duty free. That is definitely welcome. But there are many, many other drugs which need this kind of custom duty. And also there are certain equipments, because only medicines don't help patients. The equipments that are being used for the patients in the different hospitals of the country, some are charged 300% customs duty, but nothing is happening. I would just like to draw the attention of Mahamahim Rashtrapati ji. Manasa jivana nu hai kevala barsa masa dina danda karme jenara karme ekatara jivana manadanda. It should be realized that the work we do, the work for people that we do, this is more important than the statistics we give. The Awas Jojana here, housing for all, it is said, a huge number is being promised for 3 crore families, budget of 5,30,000 crores. But I would like to draw attention of this August House and also Mahamahim Rashtrapati ji. More than 11 lakh families in West Bengal are suffering, spending their nights under the open sky since 2022, when these families received sanction after we applied, and multiple number, more than 60 teams went from the central government, and they checked all data, and action taken report was also sent from the state of West Bengal for this money to go, the central government's part of the money for these more than 11 lakh families. It appears there is some kind of a economic blockade or some kind of an economic betrayal for West Bengal from the central government. This has not been mentioned here. This is for the Awas Yojana. We are requesting again these people, the common man, the poor person who is spending with his family under the open sky. He has done no mistake. He is not a political person. Why take the spite on him? Because people of Bengal have voted, never voted for the Bharatiya Janata Party, and they have always defeated. So this is not the right thing to do. The multi-fold increase in the number of seats of education in medical colleges, she has said that it is increased. Well, it is definitely increased, but